Assalamu alaikum students. I am Miss Faria Human. Again welcome back with lecture number 3 of computer subject for class 7. Our chapter number 2 is user interfaces. Let's start this chapter. User interface. The mean by which humans and computer communicate is referred to as a user interface. What it mean? जब user और computer आपस में interact करते हैं, आपस में communicate करते हैं, this is called user interface. Who is user? You are a user, I am a user. Those who are using a computer is called a user. तो जब यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, अपना टास्क परफॉर्म करेगा, दिस इज़ कॉल्ड द यूज़र इंटरफेस. थ्रू द यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट एंड प्रोवाइड आउटपुट. यानी इंटरफेस के ज़रिए ही कंप्यूटर यूज़र से इनपुट लेता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है. द यूज़र इंटरफेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. क्या मतलब है इसका? जो हमारे पास यूज़र इंटरफेस है वो इन दोनों कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन है. मींस अगर आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल्स हैं और आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है कंप्यूटर में, तो आप कोई काम नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर में अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते. एंड इफ़ यू हैव ऑल द सॉफ्टवेयर्स, यू हैव ऑल द एप्लीकेशंस एंड ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बट यू डोंट हैव हार्डवेयर, so you are not able to do any work in the computer. Here is the types of interface. First is command line user interface. Second is menu driven user interface. Third is graphical user interface. Fourth is touch user interface. And the fifth is touchless user interface. Now the command line user interface. A CLI is based on vocabulary of command, words and rules called a command language. CLI is a short form of command line interface. In this interface, user and computer can interact with the help of typing commands, with the help of typing words and rules. इस इंटरफेस में यूज़र कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है विद द हेल्प ऑफ टाइपिंग कमांड्स. कमांड्स आर ऑफन इंग्लिश वर्ड्स लाइक प्रिंट, इनपुट, रन एक्सेट्रा. जिस भी हम लैंग्वेज में काम करेंगे उनके एक सिंपल इंग्लिश वर्ड्स होंगे फॉर द टाइपिंग कमांड्स. In CLI, usually display a prompt and cursor show where to type a command. जब आप CLI में काम कर रहे होते हैं, यूजुअली जब आप CLI में काम करते हैं तो एक आपके पास चीज़ आती है प्रॉम्प्ट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट शो दैट योर कंप्यूटर इज़ रेडी फॉर एनी न्यू टास्क. जब प्रॉम्प्ट पे आ जाएं तो इसका मतलब है आपका जो प्रोग्राम है वो रेडी है किसी भी न्यू टास्क के लिए. एंड कर्सर शो वेयर टू टाइप अ कमांड. व्हाट इज़ कर्सर? अ ब्लिंकिंग लाइन जहाँ पे आप टाइप कर रहे होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ कर्सर. Second is menu driven user interface. In this interface, the computer initiates a dialog by displaying a list of commands called a menu. In this interface, user and computer interact with the help of menu bar. This interface are popular because it is not necessary to remember commands and words. मेन्यू ड्राइवन यूज़र इंटरफेस में गिवन प्रोग्राम में मेन्यूज़ अवेलेबल होते हैं, लिस्ट अवेलेबल होती है. यूज़र जस्ट selected from the menu and gave the task to the computer.
इस मेन्यू ड्राइवन यूज़र इंटरफेस में आपको कमांड्स को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, कमांड्स को टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती. वी नीड टू चूज़ द कमांड फ्रॉम द लिस्ट टू परफॉर्म एनी टास्क. हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है अपने प्रोग्राम में, वी जस्ट कैन सिलेक्ट इट एंड क्लिक इट. Graphical User Interface. A GUI is a short form of Graphical User Interface. Is simply an additional part of the operating system. जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आजकल लॉन्च हो रहे हैं, दीज ऑल आर डिपेंड ऑन द GUI. ये सब जितने भी हैं ये GUI पे काम कर रहे हैं. GUI क्या है हमारे पास? इसमें हमें कमांड्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मेन्यूज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट कैन क्लिक इट एंड परफॉर्म योर टास्क. It display windows and drop down menus. With the help of windows and with the help of icons, you just can select it, click it, double click, or either the right click and just open your program and do your work in that program. It enables us to drive our computer using a mouse. GUI run किया जाता है with the help of mouse. बहुत ही easily you can move your mouse pointer on the screen on any program and just click it and do your work. Now here I am giving you an example of GUI. GUI में आप कैसे काम करते हैं. With the help of mouse pointer you just can double click the icons. You are seeing an icons on your screen. A small graphical picture is called an icon. जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, उसका एक स्मॉल आइकन बनता है जिसको एक छोटी सी पिक्चर के थ्रू जो है वो इंडिकेट किया जाता है. दीज आर कॉल्ड द आइकन्स. सो विद द हेल्प ऑफ माउस आप जस्ट उस आइकन पे डबल क्लिक करते हैं, वो आइकन ओपन हो जाता है. एंड देन आपने उस जो भी उसमें काम करना है, सिलेक्शन करनी है, वॉट एवर यू हैव डन इट, जस्ट यू कैन ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ माउस. Review of today's lecture. Today we have covered all these topics. First is user interface, second is types of interfaces, and then CLI, command line user interface, menu driven user interface, and graphical user interface. Hopefully all these topics are clear to all of you, and then let's move to the assignment. If you attentively understand today's all the topics and today's lecture, then you all are easily fill these blanks and then note it down in your handout on page number 12. Here is another assignment which is related with your learning. Students, we have complete our chapter number 1 in previous lectures. So here I am giving you only the 3 questions for learning. Question number 1, who invented Pascaline? Describe in detail. Previous lectures में भी आपके पास given है इसके answers. इसके अलावा handout में you can easily find out these answers. Question number 2, define analytical engine. Question number 3, describe invention of Hermann Hollerith in detail. All these answers are given in your handout. So start learning from handout for your exams. Now the dear students, take care of yourself, and if you like this video, you must be like it and with the help of thumbs up, and take care. Bye bye.